अब मुझे क्या करना है, इधर प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव गिवन मी दिस पावर बी आई फाइल, राइट? आई नीड टू Power BI file. I need to change the database connections from yours to mine. Right? How do I go about it? It's a very simple problem, but just to see. So I go here. So I can change it here. The database name is here. So I go here. I go to properties. And within properties I go here, right? And then I go here, Control V, Power, right? Yes boy, yes or no? Yeah. And I say JSON to SQL 6. Then I go here and I press enter. Now you have changed your database connection here, right? Now if there is a username and a password, then we'll have to see how it works, right? So I go here, I pick this up, and I go here, and then I'm able to see the data. Is it clear? So here I have done it is, I've taken up this database, I've changed it from using the parameters here. Is it clear? And changed it to a new, picked up the new table, and this. So this is what you will need to do there once you open the Powerbi file at the client location. Is it clear? Yes or no, beta? Again I will show you. Yes, sir. You're clear on this, right? You will go here, you will change this data source name, this thing, then go down to navigation, choose this, then I go down to this ODS underscore group detail. Go here. Jyoti, is it clear? ODS underscore group details, you'll be able to do it here. Yes, sir. And from there you'll be able to get this. This should solve your problem. Yes, sir. Recording stopped. Now if I need to change from SQL Server, need to change from SQL Server to JSON, because that could also be a problem, that suppose someone does not want to maintain a database. It's very expensive, right? So what you do is a very simple thing, which it's common sense. You pick up a new source. Then you go and pick up JSON. Is it clear? Then you go to C:sample company. And then I pick up the group details. Is this clear? Yes or no? Right? Yeah. Then you take this and you mark it as, rename it as 2.
suppose someone says, boss, no, I don't want to do it through this. Then you pick up this, rename it to this, right? And then you'll have to rename it to this. Now tell me, how difficult was this? So you have now brought it from database to JSON. Is it clear? Yes or no? And then Sir, it's not, actually it's a very basic class 2 job. हाँ बोलो. yes, sir. Why change the name? Why change the name? Because this is the name, na, which is working. Because on this you would have generated the measure objects. I'm still not clear. What is the question here? What is the question here, Devjyoti? No, sir. Clear, sir. Huh? Clear. Nee, beta, what if there is any question which is not clear? So now in this ODS underscore group details is what you will declare any measures. So you have already done it. So I don't need you to do it for anyone else. So it says column load was cancelled by an error in the previous table. Which table was it? अभी वो क्योंकि कनेक्शन नहीं आया होगा ना उसमें. All the connections have not been changed. Therefore, there is a problem. You understanding from where I'm having? Because I did not change all the database connections in the SQL server. Therefore, it's not loading. Is it clear? Yes, sir. And then you can link it up with the JSON module also, because just in case it happens that they don't accept the database solution or they don't want to go ahead with it, कोई मालूम नहीं करना, then you always have the JSON module ready. Clear? Yes, sir. Which is without a database, where there is nothing. You simply get the data in JSON, then link it up with Azure cloud. Like in this particular case, I could simply take the JSON, link it up with the Azure cloud, and from the Azure cloud then I can sync it. नहीं आया समझ में? Suppose this is a RAM problem. They don't want to address the RAM problem, or there is a SQL Server install problem. They don't want to do it because let's assume they're not even able to install SQL Server. There's a RAM problem, right? They just have 3 GB, 4 GB RAM. इससे ज़्यादा है ही नहीं उनके पास, or 8 GB RAM. And you are asked that, okay, fine, boss, justify the value for increasing it to 12 GB, because per month the cost will go by 4,000 rupees a month. Is this clear? Yes, sir. That is what the case is, right? That is what your case is, right? Yes, sir. So Yes, sir. what you can do is you can simply extract the JSON, and then that JSON can be synced with Google Drive or Microsoft Azure, Microsoft OneDrive. उसको सीधा क्लाउड पे ले जाओ. थैंक यू. राइट? And from that Google Drive you can run it, जैसे हमने सब जगह किया है. So we had removed this database steps so as to make it very easy for the client. Are you clear? Yes, Because I sir. need this JSON one, because 90% customers will not keep a database, accept it. वो कहेंगे भैया डेटाबेस कौन संभाल के रखे, तो आप सीधा जेसन से कर देना. Okay.
ठीक है ना? तो इवन इन दिस गिवन क्लाइंट केस वी नीड टू हैव अ बैकअप कि बॉस अगर नहीं हो पा रहा है सीधा जेसन से कर दो भैया, ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। अब डेटाबेस नहीं खींच पा रहा है मुझे मालूम नहीं, सॉरी, सर्वर नहीं उठा पा रहा है तो मैं बैकअप रखूँगा। ओके। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो मैं इसको सेशन को यस सर। क्लोज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आई विल कम डाउन टू द सेकंड प्रॉब्लम, तो उसको बेटा देख लें। तुम्हें क्लियर हो गया ना बेटा? अगर तुम्हें काम का क्लियर हो गया देन आई नो प्रॉब्लम्स, यू शुड बी 100%। यस सर, कुछ क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर जैसे पावर में जाइए। हम्म ट्रांसफॉर्म डेटा में। हम्म 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 फिर सर आपने ये जो किसको सर आपने रीनेम किया, ग्रुप डिटेल्स टू ना? हम्म तो मैं पूछ रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ टू लिख दिया, ठीक है, तो उससे कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा सीक्वल में? क्योंकि तो सीक्वल में ओडीएस ग्रुप नहीं आया समझ में भाई, यही वाला सर रहेगा ने, ना? हाँ ओके मैं समझ गया सर। ये दिस विल गो ना, दिस विल गो, दिस विल रिमेन, so from here only you'll make it ओके। because you'll keep only one connection na. हम्म। ओके फाइन सर। So I'll just start in 5 minutes more. The right clear है ना? सर आई हैव मोर क्वेश्चन हाँ सर। पूछो। सर सीक्वल में सर, हाँ सर मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजा है। हाँ इसको ओपन कीजिए। हाँ हाँ पूछो। इसमें स्क्रिप्ट रन करना है। यस सर। मैं नया डेटाबेस बना रहा था। हाँ नहीं सर, ये खाली एक का दिए हैं सिर्फ, पूरा टोटल नहीं दिए हैं आपको।
मुझे करना क्या है बेटा, बता। आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। नहीं, मैं उसको मतलब कुछ एक डाउट है उसको पूछना चाहता हूँ बस। ये वाला है आपका ऐड वाउचर लेजर डिटेल्स का चीज दिए हैं आपको। आप लेजर 6 में ऐड लेजर वाउचर डिटेल्स में कॉपी पेस्ट कीजिए ना। ये वाला हाँ, तूने चेकआउट किया हुआ है? ऊपर है सर। मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया था। Oh, what's happening on my machine? मेरे को आराम से भी करानी पड़ेगी। फिर क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बताओ। तो सर नोटपैड को ही ओपन कीजिए नहीं तो। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या है? सर नहीं तो मैं शेयर करूँ सर। नहीं, आप पे बताओ ना, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर क्वेश्चन यहाँ पे है यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मतलब टेबल को, लेजर डिटेल्स को, तो यहाँ पे ना बिल डेट और डॉक्यूमेंट डेट दोनों है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बिल डेट लिया है। तो मैं पूछ रहा हूँ उससे यहाँ पे क्या लूँ, बिल डेट लूँ या डॉक्यूमेंट डेट लूँ? स्टिल नॉट क्लियर, कौन सा डॉक्यूमेंट डेट है, मिन डेट कौन सा है? इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं शेयर करता हूँ सर। नहीं नहीं, ये आपकी स्क्रिप्ट है ना? हाँ हाँ, जैसे डिक्लेयर कंपनी नेम वेरिएबल 255 यहाँ पे 24 लाइन में देखिए ना सर। ट्वेंटी फोर 25। कहाँ है ये वाला? मतलब क्वेश्चन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। व्हाट इज द क्वेश्चन? यहाँ पे जैसे डेट डिक्लेयर किए हैं ना सर, डॉक्यूमेंट डेट लेके। करेक्ट। हाँ, तो वहाँ मैं पूछ रहा हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट डेट होना चाहिए या बिल डेट, क्योंकि ये कौन दोनों सा है मिन यहाँ डेट, पे, बिल किसका डेट भी मिन है। डेट? बिल डेट के डॉक्यूमेंट डेट? अच्छा अच्छा, एक्शन में नहीं, डॉक्यूमेंट डेट ही आप रखो। बिल डेट मैं एक्चुअली सोचा मिन डेट क्यों पूछ रहा है वो। नहीं सर, डॉक्यूमेंट डेट ही बिल डेट रखो। बोल। नहीं नहीं नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम ब्रदर। आई थॉट वाई इज ही आस्किंग मिन डेट हियर। आप अभी इसको डॉक्यूमेंट डेट ही रखो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डॉक्यूमेंट डेट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि किस तारीख पे गया उसने ना,
डाला. Normally document date हम्म. and build date are the same, but keep it document date only for now. ओके. ठीक है, बस यही डाउट था सर एक. और पूछो. एक थोड़ा सा एक जगह प्रॉब्लम आ रहा है सर. क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ. सर स्कैन स्क्रीन करने में परमिशन दीजिए. अच्छा लो. लो पूछो. सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है सर अपडेट वाला में.